नमस्कार दोस्तों, भारत स्पीक्स में मैं हूं आज आपका होस्ट अमित और मेरे साथ हमारे साथी हैं पूनम जी, इंडियन डीवा जी और साथ ही हमारे एक पैनल जुड़ा है। हमारे स्पेसेस का एक अहम पैनल है। आज का जो मुद्दा है वो बालासोर में हुई रेल दुर्घटना या जो उसका जो पूरा इंसिडेंट है। अभी भी सिचुएशन जो है उसमें नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बट वी विल ट्राई टू कवर दैट एस्पेक्ट। हमारे साथ इसके लिए एक पूरा पैनल जुड़ा है। राजन सिंह जी हैं, आरएस लाइव का चैनल है उनका, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करते हैं बहुत डिटेल में, बहुत अच्छा काम करते हैं उसमें। हमारे साथ डॉक्टर भारत बोस हैं और डॉक्टर भारत बोस इज अ scholar in defense research analysis, geopolitical analysis. राजेंद्र रैना जी हमारे टीम का हिस्सा हैं और हमारे साथ हमें गाइड भी करते हैं और ऑलमोस्ट ऑन एवरी सब्जेक्ट ही इज द गो टू मैन। एंड ऑफ कोर्स आवर को-होस्ट पूनम जी, इंडियन डीवा जी, नमस्कार। सो गुड टू हैव यू हियर। यस, नमस्कार एवरीवन। आई एम सो ग्लैड कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं। आज ट्विटर को आफ्टर दिस इंसिडेंट जैसे-जैसे ट्विटर की ओर मैंने इस इंसिडेंट के बारे में पढ़ा, एक एक खौफ सा मन में मेरे तो आ गया है कि क्या ये क्यों और कैसे हो गया? क्या ये कुछ टैक्टिकल फेलियर था या कोई इसके पीछे कोई एक बहुत बड़ा कारण था इसे इस एक्सीडेंट को करवाया गया, या क्या था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हमारे साथ जो हमारे पैनलिस्ट हैं ये इस मैटर में ज़्यादा अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो लेट्स गो विद देम अमित जी, और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये क्या है या फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो लेट्स गो टू राजेंद्र सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप आफ्टर रीडिंग दिस इंफॉर्मेशन, आफ्टर गेटिंग दिस न्यूज़, आपको क्या फीलिंग रही और आप क्या सोचते हैं इस एक्सीडेंट के पीछे? नमस्कार अमित जी, और नमस्कार सभी पैनलिस्ट को। ये जो दुर्घटना हुई है सच में बहुत दुखद है। सच बताऊं तो सुबह समय वैसे मैं आज दूसरे प्रोजेक्ट को शूट कर रहा था, लेकिन उस बीच-बीच में भी इंफॉर्मेशन पढ़ रहा था। मैंने ट्वीट भी बहुत लेट किया, क्योंकि सच बताऊं तो एक तो यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ भी है। और खैर जांच चल रही है, जांच का विषय है। रीजंस क्या है इसके पीछे वो तो आने अभी बाकी है और उसको समय लगेगा। लेकिन अभी भी अगर आप मानिए तो यकीन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राजन भाई, ऐसा हम एक्सपेक्ट। थोड़ा सा आप इसके बारे में क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कवर करते हैं, आप उस पर्सपेक्टिव से अगर बताना चाहें कि किस तरह की डेवलपमेंट्स हुई थी या फिर उसकी कमी थी यहाँ पे, और उसमें अगर उस पर्सपेक्टिव से बताना चाहें तो। देखिए अमित भाई, इसमें जो एक चीज सबसे पहले सामने निकल के आ रही है, मोस्टली लोग यही कह रहे हैं कि कवच फेल हो गया या कवच नहीं चला या ऐसा कुछ, ऐसा उधर बहुत सारी जगहों पे, या अगर ट्विटर पर भी देखेंगे लोग ज्यादातर कमेंट कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखोगे तो रेलवे में बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया है पिछले कुछ सालों में, और वो ग्रोथ रेट भी आपको देखने को मिला है अगर रेलवे का रेवेन्यू अर्निंग देखेंगे तो। और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे तो कवच की अगर जहां तक मैं बात करूं तो खैर इस लाइन पे तो इंस्टॉल नहीं था। और दूसरा, ये जो बनाया गया ना कवच, ये हेड ऑन कोलिजन पे है। ऐसा नहीं है कि अगर आप डिलाइमेंट ऑफ द ट्रेन हो जाता है तो उस जगह पे भी ये काम करे, और खैर यहाँ पे इंस्टॉल नहीं था, विच इज द अगेन वो सेकेंड पार्ट है। और अभी तक वैसे अगर ज्यादातर लोगों को लगता है कि कर देना चाहिए था, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है जो कवच को इंस्टॉल करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इस पे चल रहा है। और ऑलमोस्ट हम लोगों ने 1100 किलोमीटर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रेलवे ने, अगर आप देखोगे तो इंस्टॉल ये जो है वो कर दिया है। और रेलवे का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करूं, तो उसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट 90% तक तो कवर कर ही दिया है इंडियन रेलवे ने। और जितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देखोगे, रेलवे को स्ट्रॉन्ग करने का, नए नए ट्रैक्स डालने का, सिंगल लाइन को डबल लाइन करने का, तो ये सब प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी यहाँ पर चल ही रहे हैं, जो कि आपको आए दिन देखने को मिलता है।
चाहे वो फ्रेट ट्रेन का हो, पैसेंजर ट्रेन का हो, आप आरआरटीएस देख लीजिए, आप वंदे भारत देख लीजिए, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई कंपनियां आ रही हैं, जो नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, वो नए नए लोकोमोटिव्स बना रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा वो इनोवेटिव्स हैं। जो मैंने एक एल्स्ट्रॉम का करके एक कवरेज भी किया था, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसके ऊपर एल्स्ट्रॉम का जो लोकोमोटिव जो एल्स्ट्रॉम ने बनाया है 12,000 हॉर्स पावर का, उसका पूरा डिटेल ब्रीफ एक अपडेट वहां पे मैंने दिया था कि किस तरीके से नए नए लोकोमोटिव्स की मदद से फ्रेट ट्रेन या लोकल पैसेंजर ट्रेन को इम्प्रूव किया जा रहा है सिक्योरिटी से। तो ऑफकोर्स अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है बीते पिछले कुछ सालों में, और जिसका हमें ग्राउंड पे जो अगर आप देखेंगे तो उसका मिल भी रहा है फायदा, चाहे वो रेवेन्यू ग्रोथ की बात हो या फिर वैसे भी। मैं अगर आपको बताऊं तो 2020 में ही एक आर्टिकल, सॉरी 21 का एक आर्टिकल है जिसमें हमें आई थिंक एक हमारे पास रिपोर्ट नहीं हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ था एक्सीडेंट का, ठीक है। तो ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट तो अच्छा खासा किया है गवर्नमेंट ने, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारा काम जो है वो आपको इस वक्त पे इंडियन रेलवे में आईआर में देखने को मिलता है। जी, यहाँ पे एक 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 बात कहना चाहूँगा। आई थिंक इट्स नॉट दैट कि अगर वंदे भारत बनाई जा रही है तो जो उसके साथ-साथ अपग्रेडेशन भी किया जा रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है काफ़ी। अब बने रहिए, इस पे हम आगे और बात करेंगे राजन भाई। डॉक्टर बोस को इन्वॉल्व करते हैं। डॉक्टर बोस, स्वागत है आपका सर। थैंक यू सो मच। एंड सही में बहुत ही दुखद भरा घटना है। देखिए, मैं ज़्यादातर सोता नहीं हूँ, तो रात भर मैं जागा था। मैं आई वाज सीइंग द पिक्चर्स। रात को तो इतना टाइम से उतना बहुत बेहतरीन पिक्चर्स नहीं आए थे। बट इन द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग, फर्स्ट लाइट, वी स्टार्टेड गेटिंग द पिक्चर्स इन अ वेरी क्लियर एंड क्रिस्टल वे। पहली बात है कि इन्वेस्टिगेशंस अपने तरीके से चलेगा। भारत सरकार have the capacity and capacitance to take down any kind of threat whatever coming to our area. But apart from that, when it comes to the investigations, generally we forget one parallel of the investigation, that is the scientific advancement and its uh, like anti-usage of it. जैसे जो बहुत सारे लोग कह रहा है ट्विटर पे कि कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम नहीं था वगैरह वगैरह. See, we have to understand one thing very clearly. Collision avoidance system is a huge, expensive network system that to be connected with the Indian Railways. दुनिया के सबसे लंबा चौड़ा रेलवे सिस्टम हिंदुस्तान का है और कोई देश का नहीं है. We have the largest employer network, that is the Indian Railway is the largest employer in the whole world. तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कोई चीन या जापान नहीं है कि जहाँ पर छोटा छोटा जगह पे आप चारों तरफ आप कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम्स लगा दिए, क्योंकि हमारे जो टोपोग्राफी है बहुत सारी जगह ऐसे भी जाता है कि समुद्र के ऊपर से जाता है या पहाड़ के बीचों बीच में से जाता है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स दिस ह्यूज एक्सपेंसिव एंड हाईली मेंटेनेबल machinery on every post and pillar from where the train is passing. It is very difficult और इसके लिए कम से कम 10 से 12 साल का टोटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रखना होगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो अगर ये देखा जाए कि बहुत सारे लोग कह रहा था कि ये कवच फेल हो गया, एज राजन जी सेड, ही इज एब्सोल्युटली राइट कि ऐसे नहीं होता है. बिकॉज रेलवे का जो ऑपरेशन होता है, डिप्लॉय एक्सपेंसिव कैपिटल एसेट्स एवरी डे, लाइक गुड्स ट्रेन होते हैं, इंक्लूडिंग रोलिंग स्टॉक्स एंड व्हाटएवर. इसका जो ये जो कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम कैसे हो सकता है? ये एयरक्राफ्ट में इजी है क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक कम है. दूसरी बात है कि एक एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है तो दूसरा एयरक्राफ्ट आता है तो एयरक्राफ्ट गिव द सिग्नल दैट यू आर कमिंग कनेक्टिंग इन माय एरिया और माय एयर स्ट्रिप. लेकिन रेलवे में क्या होता है कि एक रेल आता है तो हमको मालूम है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जब जा रहा है गाड़ी, तो both the station masters and both the guardmen and the signalman know about it, that where it's going and which train has to be stopped and which train has to be passed through. तो ये जो है ये मैनुअल होता है. मैनुअल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज ऑल्सो देयर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एट द ग्रास रूट लेवल इट इज द अगेन द मैन हु इज वर्किंग, इट इज नॉट द रोबोट हु इज वर्किंग. इंडिया जो रोबोटिक्स के ऊपर उतना काम नहीं करता है जो जापान करता होगा. एंड सेकेंडली, कल जब मैं देख रहा था, इवन टुडे मॉर्निंग, I was completely stunned to see some of the railway tracks pierced from the level. I mean, from the basement of the train, piercing out of the ceiling of the train. That was horrendous.
कैसे हो सकता है ये? एक एक्सीडेंट होने के बाद भी और एक चीज बताना चाहता हूं मैं कि हमारे इंडियन कोचेस जो है, कोच फैक्ट्रीज जो है, चित्तरंजन, उसके बाद चेन्नई, यहाँ पर दे ऑलवेज डू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस प्रोजेक्ट्स ऑन, लाइक ट्रेन को दूसरे ट्रेन धक्का मार रहा है तो उसके ऊपर वो कैसे सस्टेन हो सकता है, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज बीन यूजिंग, मटेरियल मैनेजमेंट का भी काफी सारे चीज आते हैं. सो इट इज नॉट दैट इजी. लिखने में तो बहुत कुछ लिख सकते हैं हम लोग, बट वी हैव टू गो डीप डाउन एंड वी हैव टू सी द टेक्निकल एस्पेक्ट्स एज वेल. तीसरी चीज जो है कि ये जो ट्रैक देखा गया, द ट्रैक वाज कंप्लीटली बेंडेड, सम ऑफ द ट्रैक्स वर कमिंग आउट ऑफ इट. हमने बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स पहले भी देखे हैं. I myself has experienced some of that in my lifetime. So I have seen कि एक ट्रेन के वजन से एक ट्रेन का जो पटरी है वो ऐसे घूम के सर्कुलर टर्निंग नहीं ले सकता है unless some external forces been acted on that train line. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक अजीब व गरीब चीज है, क्योंकि फिश प्लेट चेंज होने से ट्रेन का प्लेट घूम जाता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड एक ही लाइन पे 3 ट्रेन कैसे आ सकता है. और इवन इफ द गुड्स ट्रेन इज देयर, द कोरोमंडल इज as its own speed. Coromandel has a very nice top speed of, in the middle of the night it takes a high speed and it reaches to the nearest stations or its destination. तो उस टाइम पे इन दैट जीरो नो मैंस लैंड वहां पर एक गुड्स ट्रेन आ जाता है, उसके साथ टकराव होता है कोरोमंडल का. along with that, don't forget that before the Coromandel there was Humsapar Express which has already got derailed 2 of its bogies. तो ये जो चीज है, वी हैव टू गो डीप इन दैट एंड आई वाज फाइंडिंग दैट बहुत सारे हो सकता है. आई विल नॉट टॉक अबाउट डायरेक्टली ऑफ sabotage, but rather I'll say that the material management, the people who are providing the steel girders as well as the railway track का जो क्वालिटी है, जिसमें कार्बन कंटेंट का भी बात होता है काफी, maybe that is old or not been maintainable that well. That can be a possibility. However, I have a great respect for the Indian Railways shops, machine shops, because they always do the proper maintenance and proper hardware tracking and checking. So I cannot say that. और अगर आप बोलोगे कि it's a fault of the pilot or the driver, I don't think so, because कोई भी इंसान अपने आप को नहीं मारना चाहेंगे, और उसके साथ साथ इतने हजारों हजारों जो पैसेंजर उनके पास है. बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ यू गो एंड टॉक टू द ड्राइवर हैज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन एनी ऑफ अस, क्योंकि उनके जिंदगी के उनके हाथों पे इतने सारे लोगों का जिंदगी रहता है. तो ही हैव टू थिंक 10 टाइम्स, he have to think 10 times to approach a level. हो सकता है, the only possibility apart from a sabotage angle, the only possibility that can be considered is the mal communication or miscommunication between the two. Like for example, एक एग्जाम्पल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि कटपड़ी जो चेन्नई में है और राजा मुंदरी का स्टेशन है, जो जंक्शन है, इन दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन फेलियर हो गया, तो दैट कैन बी अ पॉसिबल. interstate railway communication system can be a failure. That could be a possibility, क्योंकि मैं खुद देखा हूँ, एक्सपीरियंस किया हुआ ऐसे कि ऐसा हुआ है कि उड़ीसा डिवीजन ने कह दिया, आंध्रा डिवीजन ने कह दिया कि इट इज नॉट आवर हेडेक, you have a signal problem, I don't care about it. और उड़ीसा डिवीजन बोल रहा है इट्स नॉट आवर हेडेक ईदर. तो ये कंडीशन मैल कम्युनिकेशन या मिस कम्युनिकेशन जो भी हो रहा है, आई थिंक दैट कुड बी अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ दिस एक्सीडेंट. बट अगेन, एज आई सेड, आई कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सैबोटाज पार्ट एज वेल, क्योंकि रिसेंटली वी गॉट एन इंफॉर्मेशन, जैसे यूक्रेन में दे वर यूजिंग, the Russians are using an amazing low intensity smart bombs, जिसमें क्या हो रहा था कि उनको साउंड नहीं आ रहा था, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त हो रहा था कि उनके रेलवे ट्रैक वगैरह सब उड़ जा रहा था. So yesterday when I saw that the Chinese government is advertising in Twitter about their fastest railway, 350 or 328 kilometers, और उसमें एक सिक्का को डाल के रख दिया है, सिक्का हिल नहीं रहा है, मतलब it is no shaking and nothing of that sort. Then I realized that क्या हो गया. Then I got this news, so I thought, okay, maybe again, we are analysts, our duty is to get the informations from the garbage and to connect the dots. So I'm just doing that. But again, I say this, we cannot rule out the possibility of a sabotage, because हो सकता है कि एक नक्सलाइट एरिया के साइड से जा रहा होगा, और सेकेंडरी हो सकता है कि ये टेक्निकल फेलियर हो सकता है. दैट इज ऑब्वियसली अ बिग पार्ट, बिकॉज एज आई सेड, क्वालिटी एश्योरेंस इज अ
वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द रेलवेज। और इसमें क्वालिटी एश्योरेंस को हमें पहला चीज है कि उसका आई विल सजेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गो फॉर इन्वेस्टिगेटिव इन्वेस्टिगेशन, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन विद द बैलिस्टिक लैब। इंडियन आर्म फोर्सेस के पास, डिफेंस डीआरडीओ के पास नेशनल बैलिस्टिक लैब्स है, राइना सर जानता है। Along with that, we also have an exceptional metallurgical department under the DRDO. So let the DRDO and the ballistic lab check the quality of the material being provided to the railways, about the steel materials और all the railway track का जो material है उसका एक electrolysis होना चाहिए। If I am not wrong, Raina sir will be agreeing with that कि aircraft में जब अगर aircraft में कोई problem होता था, the aircraft being landed out and then the aircraft been sent to the like hangar, and HAL or ADA they used to go for the electrolysis. So aircraft electrolysis क्योंकि उसका जो body होता था उसके ऊपर कि उसमें क्या crack है क्या नहीं है, तो those things are to be also be monitored because नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से ऐसा कुछ नहीं होता है। और द लास्ट थिंग आई वुड रादर से दैट देखिए हाँ सैबोटेज हो सकता है क्योंकि आई कैन नॉट रूल आउट। तो ये स्मार्ट बॉम्ब का जो फंडा है दे कैन यूज इट विद द ड्रोन और एनी अदर थिंग। सो और ड्रोन के जरिए अगर रेलवे अगर ड्रोन के जरिए उसको इंफ्रारेड मॉनिटरिंग एंड स्कैनिंग सिस्टम, लेजर स्कैनिंग सिस्टम के जरिए अगर रेलवे के टोटल ट्रैक को अगर इंडियन रेलवे ट्रैक कर सकता है कहाँ कहाँ पर क्रैक है, जो क्रैक हमें नॉर्मल आंखों से नहीं दिखते हैं, तो इंफ्रारेड लेजर स्कैनिंग से वो देख सकते हैं। So they can definitely take care of those in future. That's all I have to say. Thank you. थैंक यू डॉक्टर बोस। आते हैं आपके पास कुछ और डिटेल में से जानेंगे। उससे पहले मैं राजेंद्र सर के पास जाऊंगी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको क्या लगता है ह्यूमन एरर, टेक्निकल फेलियर या फिर सबोटाज, आपका क्या थिंकिंग है इसके बारे में? Thank you. Namaskar सबको. See, there are 2 or 3 things I think the previous 2 gentlemen, Rajan ji ने भी और डॉक्टर साहब ने भी बहुत बढ़िया तरीके से एनालाइज किया. So let's complete and close the technical part of it first. I think we started with the rails और जिसको ट्रैक कहते हैं हम common parlance में. These are hot forgings और जो अभी भी चल रही हैं हमारे पास इंडिया में, ये ओवर डिजाइंड है अभी भी. You will see कि वंदे भारत भी जहाँ चल रहा है कहीं पे भी we have not changed the tracks because these are good enough to go till 200 kilometers speed पे भी अभी उनकी इतनी ज़्यादा capacity है. So one thing going by what Dr. Bose also said, and I fully agree, that you will have to take a few pieces of this track to see that what has happened to this, because bending of this track is not possible. Impossible is the word. कि किसी तरीके से नहीं हो सकता. These tracks do not age. Let's be very clear, क्योंकि forging में कोई ऐसा aging नहीं होता है, ना कोई ऐसा stress development होता है इसमें. So the tracks absolutely dead giveaway नहीं है उसमें unless something external has happened. So that is not possible. Number 2 is as far as the signaling is concerned. Now, is that a human error? Once again, I go with Dr. Bose saying that has there been a mismatch between the 2 agencies? Remains to be seen. Number 3 is external problem, या जिसको हम sabotage कहते हैं, absolutely not to be ruled out, because this is too much of a coincidence. काफी सारे चीजें इसमें coincidence हैं और human element is only up to a limit. There is almost idiot proofing है आज की डेट में on signaling portion. Yes, कवच नहीं था इस एरिया में, let's say it was not there, but we have been running without कवच hundreds and thousands of kilometers per day on these tracks. To me, that is almost, if nothing else, 33% possibility of a sabotage. Now, who should do it? As far as the technology part is concerned, I have no issues. That we have people, particularly on the metallurgical side, there are labs and all, and there's methods and mechanisms, SOPs हैं उसके लिए. Signaling के लिए we'll have people to do it. But as far as the sabotage angle is concerned, I would like to see NIA get into it, because ये railways के बस की बात नहीं है ये investigate करना. Yes, and NIA would need support of these people. That what all could have happened at the junction. How could
so many things happen at one point of time at one place because there are three of them involved. So to that extent, external agency on investigation of a sabotage. Number two is that for following a particular pattern and in a very professional manner and a पूरा thorough empowered team होनी चाहिए, which will get into the details in a time bound manner, and they should be provided all sorts of support, as rightly put, be it the Air Force, be it the metallurgical labs, or be it other labs. आज की डेट में आपके पास क्या नहीं है इंडिया में, and if you need for future also you can get experts from overseas. कोई shortage नहीं है experts की, and we are talking of a head-on collision at 110, 120 kilometers. Is this any speed? If you ask me, none of them has crossed. We are running at 180. We have crossed. We have crossed 200. ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये 120 की स्पीड पे चल रही थी at best that time. Now this is what the first information tells us. So there are quite a few areas of doubt which raise too many concerns. और जो देवा जी आप कह रही हैं, I would certainly not rule out 33% chance of that, and 33% of signaling and what all has happened on the track, I would rule out कि कोई design deficiency है. No, there is none, because not in this area. And the last thing is that as far as railway capability is concerned, we have now gone into that stage of railway construction. आपने देखा अभी हमने complete किया है जो जम्मू श्रीनगर railway bridge है. The tallest railway bridge, towers over even Eiffel Tower, and all done by Indian agencies. वहां पे भी कोंकण रेलवेज काम कर रहा है, वहां पे भी शापोजी पलूंजी काम कर रहा है, वहां पे टाटा वाले काम कर रहे हैं. So we have that capability. So let's not doubt that part. Once again, going with Dr. Bose, that yes, absolutely no issue. So we have all the wherewithal to get into the details. But my only request would be, through this debate of ours, that NIA has to get involved, because they have the finest of the people who go from doubting the whole thing. So we'll have to begin with the doubt on all areas. Let's not rule out doubt on anything to start with. So that would be my starting points on this. Right. So I mean, if I may, दो तीन चीजें हैं यहाँ पे. एक तो प्रधानमंत्री ने अभी कहा है कि उनका जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि इसके पीछे जो भी है वो बख्शा नहीं जाएगा, या तो इन्वेस्टिगेशन होगी. आई मीन विल सी हाउ इट कम्स. लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इट्स नॉट अ स्टैंड अलोन इंसिडेंट. इस तरह की और भी घटनाएं आती रही हैं. कहीं ना कहीं केरला से आई है हमारे पास, जहां पे उसका वो टायर आई थिंक उसके आगे मिला है. और भी इस तरह की कुछ घटनाएं पिछले कुछ दिनों में कोशिश होती रही है. और इसमें सबसे ज्यादा जो एक मुझे लगता है जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है भारत की ऑपोजिशन पार्टीज का, वो मुझे बहुत ही I mean, I'm really confused with the way they are behaving. The investigation has, I mean, we are still in a crisis situation, and it almost seems that they are celebrating this thing just to target the government. इस तरह के काफी tweets हैं. I think I'll put it here. But और वही एक चीज जो है सोशल मीडिया में जा रही है. अब ये क्यों जा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं एक जो पैटर्न चला आ रहा है कि एक पर्टिकुलर खास व्यक्ति बाहर जाता है विदेश में, और वहां से सर ओके आई थिंक यू वांट टू. मैं वो पॉइंट किया था, बट वन थिंग got me a pop-up in my head that अब देखो the strategic location of this, अगर मैं इसको sabotage के point of view से देखता हूँ, इसको अगर investigation point of view से देखता हूँ, if we follow the proper way of investigations, उसमें देखा जाता है कि consecutive कुछ ऐसे हादसा होता है, जैसे कानपुर में कुछ हादसा हुआ, एक ट्रेन के अंदर आग लग गया. केरला में क्या हुआ कि टायर रख दिया गया, तो that
go for a derailment, और उसके बाद ये यहाँ पर हो रहा है. Now you tell me, ये very interesting point I'm going to put out over now. पिछले कुछ महीनों से Indian Armed Forces, Air Force and Navy precisely going for a interim test range in Balasore and Sriharikota. Now, and very often we are trying to test our different types of air defense machineries and weaponries in that area. तो अगर इसको अगर कोइंसिडेंस कहें या एक डॉट आउट, लेट्स ड्रॉ अ लाइन ऑन दैट कि इस एरिया से द बालासोर व्हीलर आइलैंड कितना दूर है और द ऑयल डंप नियर बाय कितना दूर है, देन व्हाट इज द रीजन दैट व्हाई बालासोर हैज बीन चोजन, or maybe it's to check the water and the preparedness of the Indian government, how well prepared we are to take down this kind of situations if happen ever in future. तो मुझे ये एंगल भी लगता है कि देखिए वो गुड्स ट्रेन में क्या था, आई डोंट नो. दे आर टॉकिंग अबाउट ओर, मे बी समटाइम्स द गुड्स ट्रेन आर वेरी क्लासिफाइड, ओनली इंडियन आर्मी एंड द गवर्नमेंट इज नोन अबाउट द थिंग, नॉट इवन रेलवेज समटाइम्स. सो उसके ऊपर कोई टिप्पणी ना करना ही अच्छा है. बट लेट्स से कि ये जो हादसा हुआ, फॉर एग्जाम्पल कि एक ट्रिनिटी मतलब एक त्रिशूल की तरह एंगल हो गया, मतलब एक तरफ गुड्स ट्रेन आ गया, उसके ऊपर हम सफर गया, इसके ऊपर कंधे के ऊपर चला गया आपका कोरोमंडल, फाइन, एग्रीड. लेकिन that was maybe a diversion. Somebody is trying to sneak inside the Balasore interim test range. Can we rule out that possibility? It's direct. It will be a direct national threat because we have already seen Chinese fishermen in the Bay of Bengal. We cannot rule out, even not Chinese. There can be Chinese paid agents as well, just to disrupt this government, just to stall this government. As sir is saying, he is absolutely correct. और देखिए collision avoidance system जो है ना हमारे यहाँ पर, Indian Air Force is using it for a long time. And secondly, इंडिया में सबसे बेहतरीन मेटलर्जिकल इंस्टीट्यूट जो है वो एयरफोर्स के पास है, बिकॉज एयरफोर्स इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, जियोलॉजी, एवरीथिंग इज देयर विद द एयरफोर्स. सो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस एक्सपर्ट्स, नॉट द एक्सपर्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज, बिकॉज देखो यूनिवर्सिटीज के जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना उनके पास थियोरेटिकल डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा रहते हैं, but when you go for the practical operational analysis, you have to take the help of the professionals, and there the professionals will come to an end to help you out. And ये जो DRDO का जो wheeler island है, that was giving me a spark over there that maybe that could be a possibility. As sir बोला 33%, let me say कुछ another 10% increase कर देता हूँ मैं इसको. Thank you. Rajinder sir, आप muted हैं. I think you need to see what Dr. Bose said, just to add to that and just to widen the canvas of his findings, is that one has to think not linear, we have to get disruptive, because the angle that he has spoken about, whether it is right or not, but that has to be looked into. Because if you go with the general public of the railways, or as he rightly said, the theoreticians from the labs and all, they cannot think on disruptive lines. So this is what needs to be done, because we might be kept busy with this and you might not widen the scope of your looking around. You will keep looking within. So it is that disruptive thinking which will get us through. That is why we are looking for people from outside the domain, as he rightly said, Air Force, NIA, and the people who will not be straitjacketed into doing what they have been doing in the past. We have to get people who have not done and who will do something which is not the routine. So it's out of routine because it's a very unfortunate accident which has not been a routine accident. So we have to look at it from a 360-degree perspective to find out what is behind it. And Dr. Bose has added another 10%. Yes, why not? Because the area, as he rightly said, Balasore is a very well known area. So Balasore could have been an eyesore for them. So we have to look into this area, the place, happenings around, and get out of this domain. Let a particular set of people investigate this area, but outside this perimeter of this area, we need experts from other domains who will get into something which is not a linear.
So that's what I thought I'll add to what Dr. Sam said. Raina sir, I just want to add one thing you have just spoken about. As we know that the Prime Minister has said that whoever is responsible for this heinous crime will not be spared out. Why the Prime Minister said this? Because he is a man of great esteem. He don't comment anything in public or in the press. Because always we understand that the agencies are working absolutely fine and they are giving him the right information and the inputs that something has happened that might related to any kind of internal sabotage or any kind of national threat. So I think that's why the Prime Minister has to speak out that whoever has done it, because you have to mark his words, whoever has done it. Now, ये क्यों बोला गया? Why not he said this, that we will look into this thing, we will go for the analysis, and I am having a full faith on the drivers. So he has never said those things. He said whoever is responsible should not be spared out. So this gives a direct because देखिए sir, I am an analyst, तो मेरे लिए ये सब out of the box tinkles are giving a much more better answer compared to that. So I think this to be grilled, but not only by NIA. I rather say in this way that the military intelligence that consists of the air intelligence and naval intelligence, because since the Balasore is directly at the Ministry of Defense area, so the naval intelligence, air intelligence, and the military intelligence should also take part in this investigation. Otherwise, we cannot rule out and we cannot find out the nail in the haystack. Hey, well, I mean, yeah. Thank you. Perfectly well said. Perfectly well said. Yes, I limited it to NIA, but yes, go with you. Let it be a cross services a group in which NIA could be a lead or a party, and let other people, because so long as we have a multidisciplinary team of people, quick crack and faster resolution is possible. Fully good. Yeah, Mr. Amit. I would add one more aspect into this. Not sure how concerning it is or not, but I mean, maybe if you could answer. Vande Bharat itself has been seen as a great product and a world class product. वो उसको जिस तरह से डेवलप किया गया है, एक अपनी मार्केट बना रहा है वो इंटरनेशनली भी, and that threatens a lot of traditional or the companies as well who are into it, or the countries as well. So are there any interests which could have been possible in this indirectly, directly? From how do you see that? Maybe I'll add a point here, and then I'll like to hear out Dr. Bose. See, one thing that in the last 2 years, Railways has been very clear with their vendors that you got to upgrade, right? Because when they are changing technology, you don't have too many players in India, and you know it. And there are companies who have a single customer, that is Indian Railways. And Indian Railways has been telling them that you upgrade and we buy it from you. So it has been a one-on-one interaction with them. I know of a company which I have been indirectly a part of, and they have upgraded themselves, particularly on the air brakes and all. Let's be very clear. And they are the single vendors, and their Railways is their single customer. So when the relation is such, you are trying to upgrade. And if you remember, I take you back to Mr. Suresh Prabhu, who was trying to work on the infrastructure, and there was a complete lobby who ensured they hounded him out. So let's not forget that. And the same lobby has once again started, even the funeral of 266 people has not got completed, that they've started in terms of resignation of Mr. Ashwini Vaishnav. Now you talk about, and they have been talking about Mr. Nitish Kumar, but Nitish Kumar resigned in 1999. But lo and behold, he came back in 2001. So what changed in 1.5 years for him to take back the same ministry where from he resigned? So where does come the morality? And in 2002, when the Godhra Kand happened, he did not resign that time. So let's not put morality where it does not belong. As you rightly said, Amitji, that there are forces particularly. One is what we are talking about, the general suspects, but you raised a point where I would like Dr. Bose also to come in, is the vendors, the suppliers, the contractors
who are not ready to move with technology, to invest. They would like to carry on with the old technology, and any upgrade and change is not acceptable to them. That's why they play their hand. Now, how much of it is possible? Let's hear out Dr. Bose. Over to you, sir. Well, sir, well said. And actually, you are right. क्योंकि इसके इसके ऊपर मैं एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर सूरज प्रभु इज अ ग्रेट मैन. आई हैव नो डाउट ऑन दैट. क्योंकि 2018 को आई वाज कमिंग डाउन फ्रॉम बैंगलोर टू कलकत्ता, एंड आई वाज ट्रैवलिंग द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस यशवंतपुर हावड़ा. तो ये जब कटपड़ी छोड़ के राजा मुंद्री की तरफ आ रहे थे, दैट वाज द टाइम द ड्राइवर ऑटोमेटिकली स्टॉप द कार. तो we asked the TT over there what happened. He said that some problem. So I got down off the train, and everyone getting down off the train, and we saw that almost 450 meter of the rail line is not there, and it's happened in front of me. So everybody was having, because when you are in the AC coach, at least in a passenger or the general coach or the SL sleeper coach, you are happy when it's not the current is off. But in the AC coach, you will die like a closed door chicken. So you have to come out of that AC, because the AC is not working. It works on dynamo. So we came out. We saw that the driver is saying that we can't help because there is no line. So they're trying to connect with everyone. There is no connectivity. So with their communications. So we came down, and I started trying, because the number is written on the toilet, beside the toilet of the railways, that please call the railway helpline number. That is so busy, or maybe they kept it intentionally busy. I don't know. So I got the number from the Google, and I got the number from the Southeastern Railway headquarters in Howrah. I called the CRM, and I eventually told him about my identity, and I told him that, see, I don't care about what the hell you are doing, but if these people dies, your hand will be filled with the blood of these innocent lives. So you do whatever you want. You connect with Delhi, you do whatever you want, but save these people, because your children are there. The sick people are there who have gone to Bangalore for treatment. They're coming back, returning back. So every person's life is in danger right now. So he said, sir, where are you? I said, this is the thing. And he asked me about my number. I gave him my number. And that person, he was a CRM. He connected me directly from his call to the central command in Delhi and the Rail Bhavan. And I was not aware of that. Suresh Prabhu is also sitting there in the room. And he gave a total picture. And when I was talking to them, that time only he connected with Suresh Prabhu and the Rail Bhavan, and they connected with the National Informatics Center, NIC. And they track hold of my number and the location of the train, and they got the entire picture that there is 450 meters of the train line is missing. Now, whose fault is that? Katpadi Junction is saying that it is not our fault, it is not our jurisdiction. And Andhra Rajamundry saying it is not our jurisdiction. So, end of the day, it took 4 hours for them to solve that matter. In the span of time, they sent us a special train with RPF and food. And the Suresh Prabhu directly called me also. He said, Dr. Bose, don't worry, we are there with you guys. You have done a great job, because people were about to getting furious, sir, and they were about to destroy the railway property. I stopped them. I said, don't do it. Wait and watch. Wait for another 1 hour. It will be taken care of. And eventually, the train line to ek din mein to laga nahi sakte, but they got us in some other train, and that came down to Calcutta next day after reaching time was 1:30 in the afternoon. It reached at 10:30. So these things of miscommunication does happen. That is very true. But again, tender की बात, railway का जो tender होता है, अमित भाई, that is generally checked, rechecked, and again ultra rechecked by the different departments, like the chairman of the railway safety and other organizations. But yes, अब उसका अगर जो सब टेंडर है, उसमें जो क्वालिटी ऑफ द मटेरियल उसको ऐड किया जा रहा है. देखिए, अभी इंडिया इज स्टैंडिंग इन सच ए पोजीशन, मेनी वर्ल्ड कंट्री वांट टू पुश आउट अस बैक टू द लाइक डार्क पास्ट अगेन. हमारे विरुद्ध बहुत सारे दुश्मन देश है जो ऐसे तरीके की चीजें बना रहे हैं जिसमें कोई भी आदमी बुद्धू बन सकता है.
So let's say मतलब in this way, when you can't catch somebody with his speed, I mean आप उसके टांग अड़ाते हैं उस पे, तो something like that, correct, isn't it? correct. Because see, you have to Sabotage. understand Yeah. separate geopolitical aspects is coming over here. Compared to China, our GDP is growing, and दूसरे देशों का GDP shrinking. America's GDP has gone down. China's inflation is there going down. India is the only stable country. Secondly, if we see that aspect, then we see the 2024 election is coming up. So Modi needs to get out of this chair. Many people don't like Modi. That is another prospect. ये होता है कि आपका पॉलिटिकल एस्पियोनाज, एक होता है इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज, और तीसरा होता है टैक्टिकल एस्पियोनाज. तो ये टैक्टिकल एस्पियोनाज जो है, इसमें क्या हो रहा है, आपको जो मटेरियल दिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील का एक मटेरियल दिया जा रहा है जो रेलवे ट्रैक है, आपको मालूम है टाटा से आ रहा है. आपको ये मालूम है कि टाटा का नाम से दूसरे एक प्राइवेट कंपनी कर रहा है, चाइनीज कंपनी कर रहा है टाटा के नाम से. डू यू नो दैट? तो मेरा क्वेश्चन यहीं पर है कि आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू चेक एवरी मेटल, एवरी लोहा, एवरी स्टील getting from the factories to the government agencies like the railways or the any other organization, कि उसका मटेरियल चेक कीजिए. हमारे देश पे वी हैव एक्सीलेंट डॉक्टर्स, एक्सीलेंट इंजीनियर्स, एक्सीलेंट साइंटिस्ट, बट वी डोंट हैव एक्सीलेंट क्वालिटी एश्योरेंस एक्सपर्ट्स. वो क्वालिटी एश्योरेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं, 20% of them, sorry, not 20%, 2.2% of them are only fixed to the Indian Air Force and the Indian Navy. And Raina sir is the right person to say on that, क्योंकि that is a fact. क्वालिटी एश्योरेंस के जो पैरामीटर्स होते हैं, 6 सिग्मा गोल्ड, आई मेंशन इन माय ट्वीट, 6 सिग्मा गोल्ड, उसके नीचे कोई क्वालिटी एश्योरेंस हो ही नहीं सकता. You have to be 98.99% perfect, otherwise we cannot take that material. तो what is the guarantee? ये मटेरियल हो सकता है, टाटा का माल है, टाटा का मटेरियल है, that has been delivered to the warehouse of railways in 1970, that has been used now. Lot of ferrous oxide, lot of carbon content, lot of other aspect might be there. पासिंग आउट के टाइम पे तो सिग्नेचर मार दे रहा है कोई आदमी, मे बी दैट पर्सन इज करप्टेड अगेन. आई कांट रूल आउट दोस पॉसिबिलिटीज. आई एम गोइंग टेक्निकल. आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम एनीवन, एनी पॉलिटिकल पार्टी. आई एम गोइंग टेक्निकल. जी, thank you, Dr. Bose. See, what I was thinking कि जो रेलवे मिनिस्ट्री है, ये वन ऑफ द 5 स्टार मिनिस्ट्री हम इसको बोल सकते हैं. द वे दे हैव डन, कुछ समय से हम जो देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, और इट इज रियली गोइंग वेरी गुड. इंटरनेशनल लेवल में भी हम इसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं, वी आर कमिंग टू दैट लेवल नाउ. मगर 2-3 दिन में डॉक्टर बोस एंड राजेंद्र सर, 2-3 दिन में 2 और ट्रेन थी, उनके ऊपर भी इस तरह से सबोटाज की कोशिश की गई. मैं अभी वही देखने की कोशिश करी थी. एक तो ये जो कन्नूर एक्सप्रेस है, उसमें 2 दिन पहले शायद कुछ आग लगाने की कोशिश की गई थी. बहुत बड़े डैमेज का एक प्लान था, इफ यू हैव रेड दैट न्यूज. और आज जब ये एक्सीडेंट हुआ है, उसी समय कोरामंडल एक्सप्रेस है, उसमें भी कोशिश की गई थी. उसका भी जो ट्रैक था वो डिरेल हुआ था. वो तो एक रेलवे ऑफिसर की अथॉरिटी की वजह से वो बच गया एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते. ये 3 एक साथ 1-2 दिन के अंतर में ऐसा होना, ये कोइंसिडेंट हो सकता है क्या? आई 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 एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट एज अ कोइंसिडेंट. And the way it is being pushed at the in the social media, maybe if you can also talk about that, Diva ji, कि किस तरह से ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसका किस तरह से रिस्पांस आ रहा है. I mean, maybe I would like to hear from you on that one. See, जितना मुझे पता चला है, there are 2 sides at present. One is favoring the government, and they are taking it as an accident, and they believe in the proper investigation, and it should come to some result. And we believe more of the people are very much thinking it is a sabotage. But the uh, other side, I can say the opposition side, they have very strange behavior. They want
दे आर मोदी से उनको उनका रेजिग्नेशन चाहिए, रेलवे मिनिस्टर का उनको रेजिग्नेशन चाहिए, एंड ऑल द थिंग्स फेलियर उसको बोल रहे हैं। रेलवे मिनिस्ट्री ने जितना काम किया है उन सब के अब मजाक बनाया जा रहा है, मॉक किया जा रहा है। कवच एक बहुत अच्छा सिस्टम हमारी इनलैंड सिस्टम है जिसको लेकर के आया जा रहा है, उसका मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है विदाउट नोइंग कि व्हाट कवच का फंक्शनिंग कैसे है। बट ओवरऑल सोशल मीडिया टेक्स दिस एक एडवांटेज की तरह लिया जाता है, और वही अपोजिशन ने इसको एक एडवांटेज लिया है जिसके थ्रू वो मोदी गवर्नमेंट को अटैक कर सके, क्योंकि दे आर सर्चिंग फॉर सच अपॉर्चुनिटीज वेरी ऑफन, वन आफ्टर वन। एंड सेकेंडली, डॉक्टर बोस, मैं आती हूँ आपके पास। मैं सोशल मीडिया के ट्रेंड में जो चल रहा है, so many people are getting taking this in association with Rahul Gandhi's जैसा अभी अमित जी आपने बोला था का यूएस विजिट। वहां जाकर के जिस तरह के उनके स्टेटमेंट है और जिस तरह की उनकी हरकतें हैं या जिस तरह के लोगों से वो मिल रहे हैं, उसको देख करके, और पास्ट में ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो जब भी देश के बाहर जाते हैं तो देश में कोई ना कोई मुसीबत आती है, और एक बड़े लेवल की मुसीबत आती है। We are going towards 2024. It is a do and die situation for the opposition as well. Because ये अगर ये चांस उनके हाथ से निकलता है तो next 5 years they will be sitting again in the same position, or so many people will lose the chance even to go for further elections in later 2029. तो ये बहुत ही critical situation है opposition के लिए भी। तो do and die के कारण ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स की हेल्प लेकर के ये सबोटाज की कोशिश की जा रही है, ताकि मोदी गवर्नमेंट जो है वो बैकफुट में आ जाए और किसी ना किसी तरह से अपोजिशन को आने वाले इलेक्शन में कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट मिल सके। सो दिस इज द ट्रेंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन ट्विटर इज द मेन सोर्स ऑफ सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज वहीं पे प्रोपेगेंडा बनते हैं और वहीं पे बस्ट होते हैं। So that's what is getting discussed in the social media. एक्चुअली मैं सवेरे इसी को ट्वीट किया था कि whenever पप्पू goes out of India, नहीं sorry, my mistake, it's Pappu Zelensky of India. So when he goes to out of India, that time every time India face riot or hartal या any kind of toolkit, okay, तो ऐसे ऐसे होते रहते हैं। So last time he failed because he ran away and went to Germany and done something wrong, and that time he's been banned of going out and kind of thing happened, and then he came back again. Now again he's going down. तो ये जो हादसा है, that is a normal propaganda. Whatever he is doing is best in that. One good thing, thanks to Pappu for that, that he actually made sure that 2024 is again the crowning glory for the BJP. Because his every movement is helpful to BJP, if you see from the technical and the political terms. अब रह गया सैबोटाज की फंडा। इफ यू ऑब्जर्व टुडे, आज ट्विटर पे जितने नेशनलिस्ट ट्वीट कर रहा है, आई हैव नॉट सीन that amount of anti-nationals tweeting on that, except abusing the prime minister and demanding the resignation of the railway minister along with the कवच। हम लोग ये भूल जा रहे हैं कि देयर इज अनदर पैरेलल ऑफ द कवच। कवच इज जस्ट यू कैन से अ मेटाफोर फ्रॉम जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट। अगर ये कवच फेल हो जाता है, देन द ऑपोजिशन विल क्रिएट अ रैकस इन द पार्लियामेंट सेइंग ये कवच, एक रेलवे का कवच दे नहीं पाया तो भारत सरकार मिसाइल डिफेंस का क्या कवच देगा? That will also have a very close impact on our national security. So ये जो proper planning है, ये planning doesn't come from the head of Pappu, but someone sitting in Sweden or someone sitting in US are giving this exceptional planning, and make sure this kind of act, either Naxalite or any Khalistani operator, क्योंकि for the last couple of 2 months lot many खालिस्तानी ऑपरेटर्स, वो काफी सारे एक्स आर्मी ऑपरेटर भी है, ऐसा बात नहीं है कि सिविलियंस है, एक्स आर्मी ऑपरेटर्स भी है जो कनाडा में बैठ गया था, कनाडा से इंडियन वापस आ रहे हैं एंड वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट लाइक अ सिविलियंस। दे आर सो एडमेंट टू क्रिएट रैकर्स इनसाइड द सिटीज ऑफ इंडिया। So that is already had a Indian government already had a code blue
मतलब एक कोल्ड थ्रेड ऑलरेडी है इन द एजेंसीज, सो दे आर ऑलरेडी मॉनिटरिंग दैट. तो अगर And I ये think सारे this is also the week going on for any yeah, that's what I'm saying, Blue that Star. Yeah. yes, and we cannot rule out that possibility as well. क्योंकि एक बात है, compared to the Pakistani terrorist and a Khalistani terrorist, always remember this: the Khalistani terrorists, a major portion of them, either from the police or from the armed forces, retired. They joined the Khalistan. They've been confused by the ISI government. So we cannot rule out that possibility also, because Pakistani terrorists से भी dangerous है Khalistani terrorist. And I'm telling you with full confidence, and I'm sure Raina sir is there. He will be the right person to guide you on that as well, because these people are much more trained, much more well like versed. आप देखोगे एक पाकिस्तानी टेररिस्ट अनपढ़ गवार होता है, उनको बोला जाता है तुम्हें तुम्हारे घर पे 50,000 दे जा रहा है, तुम वहां पर जाके बम फोड़ दो. बट कंपेयर टू ए खालिस्तानी टेररिस्ट, ही इज क्वालिफाइड, he is staying in Canada or UK or coming down to India to attend some marriage ceremony of his cousins, and then the part time he's also doing this work. So you cannot rule out that possibility. Let me carry forward what was raised, and what you alluded to is two things. One is that when they talk about resignation, I categorically say that resignation is the refuge of the inefficient. So he is a person who has to fix it, and he is capable enough to fix it. Let's be very clear about it. That is one. Number two is the problem. Opposition has all the rights to raise to issues, to flag issues, but they should wait, as I said, for at least the tragedy to be taken care of, the funeral of the people, taking these injured, seriously injured, and lesser injured people to the right places, to the hospitals, to the first aid. It was so heartening to see people queue up for blood donation. Such a wonderful sight that we have such humanity in that area. The other part is that you have RSS workers selflessly working in this area. But I think one person who needs to be given due credit is Mr. Naveen Patnaik. Absolutely. A very fantastic leader. No mess, no statements, no disturbance at all. This is the type of opposition we need. And that is what we always say, that we need opposition, but we need the right opposition who raise issues, who flag issues at the right time. They better learn it from Mr. Naveen Patnaik. And I hope that Mr. Naveen Patnaik continues in Orissa. That's the type. He would be the guiding light for Indian opposition. See how you can oppose at the right time. He's the person who disturbs the PM at dead of the night to get the support. Others are not following this type of decorum that is desired of people in the opposition. So that was one point. And the last point I thought is what we need to talk about, that when we are talking about sabotage. I said something, Dr. Bose said something, we varied on 10% points. We never said it is a dead giveaway that it's a sabotage. But on the other side, they have started with a judgment. They started that PM should resign or the railway minister should resign. They don't leave any scope for anything else. And that is the divide which Divaji was talking about on social media, that people are saying there is a possibility it should be investigated. Dr. Bose gave the detail which all areas should be gotten into. But we never said that, yes, it is only a case of sabotage. No, we said explore that possibility. But on the other side, you find they touch the extreme position that only the railway minister should resign. There's nothing else to it, and it is the inefficiency. And as far as our opposition member who is not even a member of parliament today, the type of utterances he has started, I would like to put it on record, when he moved on the truck, you might soon see a trucker strike in India. That is my hunch, because they are upset by the GDP growth figures in the last 2 quarters in particular, 7.2, which is bamboozled even the most of the optimistic economists. So they would like to put a spanner in this growth to create that panic.
And what better than to disrupt the supply chain? Because we are a consumption driven economy, they would like to slow down the industry, because service they can't do anything, but manufacturing, services and all, you might see many such things coming in. That's why we try to see these dots in next 8 to 10 months are going to be very critical, and we have to be on there. This is threatening. This is seriously threatening because the way every day new things are coming, it is it's every next incident is more you know I don't have word to say what I'm Actually, feeling at this Divaji, moment because इतना बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट के बाद what next? दिवाजी, अभी अभी ऐसा है कि जो सर ने बोला, it was like actually I was enjoying and relishing and cherishing the way sir was saying. That was fascinating actually. तो क्या है कि ये जो ट्रकर्स का जो फंडा है, some of them started raising the point that ये जो रेसलर वाला जो हादसा हुआ है, फियास्को हुआ है, that has been to avoid that this has been created by the government. Fine. चलो उनका भी मान लेते हैं for the time being. तो let's say in this way कि तो अगर we put across that whenever Pappu goes out of India, then there is a chaos. What kind of relationship we can put on that? Point number one. Point number two is, ऐसे सर ने कहा कि ट्रैकर्स ये जो है, जब भी हमारे जीडीपी goes above 6 or 7 or 8, always this kind of slowdown of the economy starts happening with the help of these amazing intellectuals from the Lutyens community. They always try to create all kind of things. लेकिन अभी जो स्टोरी लग रहा है मुझे कि if you go back a month back, you will see एक महीना पहले वहां पर मणिपुर फियास्को था. मणिपुर फियास्को के बाद कहीं और कुछ और होना स्टार्ट हो गया. Then this kind of thing starting, मतलब you see the pattern. It's just like a wheel of fortune, and where you have 10 rupees, 5 rupees, 50 rupees, you spin the wheel and whatever you, if you're lucky, you will get 100 rupees. तो ये ऐसा है, एक बार मणिपुर, एक बार केरला, एक बार उड़ीसा, एक बार बंगाल, ऐसे करके जो ये wheel of fortune घुमा जा रहा है. This is to make us busy, to slow down our economy and to disrupt our national development and national destroy our national security. ये तो बहुत सोचा समझा हुआ प्लान अप है. क्योंकि देखो, इफ यू गो बैक यस्टरडे और डे यस्टरडे, फॉक्सकॉन ने ऑपरेशन स्टार्ट किया, कांग्रेस का लग गया पूरा एकदम गर्मी. तो that's what happening. Why Foxconn in India? Why Foxconn is not in China? Because in 2020 and after the corona aspect, Foxconn shifted from China to India. और हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा लिथियम क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर से we are making the best of the semiconductors in the world. So that is also giving a boil to the Chinese. And entire Congress, the opposition regime is being fed by the Chinese government. And China is being supported by, China is the subcontractor of the WEF, World Economic Forum. So you see the chain. And World Economic Forum का contractor कौन है? George Soros. George Soros से जाता है आपके China. China से जाता है हमारे anti-nationals or the opposition. So you get the clear picture of it. Why India is being stalled every time of its development? Right. Absolutely. I mean, these are the जो इन्होंने छोड़े हुए हैं, I mean, misinformation campaign वाले और इस तरह के celebrate करने वाले, I think definitely they have the vested interests, and these are the vested interests which are being controlled from outside. अमित भाई, एक important information देना चाहता हूँ. देखिए, I was not there in Twitter Spaces for a long time because I was taking care of the in US chapter on the misinformation. अभी US में जो किया जा रहा है, वो that will come to India very soon. MK Ultra बोल के एक ऑप्शन है. MK Ultra was a project by the Germans back in 1940s, और अमेरिकन CIA उसके साथ इन्वॉल्व था. ये माइंड प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट था जो नाजी कैंप में होता था. उसको हाईजैक करके अमेरिकन आफ्टर 45 लेके आए अपने पास, और उसको ऑपरेट करके दुनिया भर में सारे जगह पे अमेरिकन हेजिमोनी को स्प्रेड करने वाला जो माइंड गेम था, दैट इज एमके अल्ट्रा. अब एमके अल्ट्रा का वर्जन इंडिया में भी लागू हो रहा है. एंड व्हाई यू थिंक पप्पू इज गोइंग टू यूएस? नाउ कनेक्ट द डॉट्स.
MK अल्ट्रा के जरिए, जैसे फाइजर फॉर एग्जांपल, अमेरिकन एक्टर जेमी फॉक्स अंधा हो गया क्योंकि उनको फाइजर वैक्सीन लगाया उन्होंने, और लगाने के बाद द आफ्टरमाथ ऑफ फाइजर वैक्सीन ही बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड। तो फाइजर वैक्सीन को कंप्लीटली बैंड किया है नॉर्मल अमेरिकन सिटीजन्स ने, अगेंस्ट गोइंग टू द गवर्नमेंट, गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके, नाउ इसी कॉन्सेप्ट को हमारे देश पे कांग्रेस ने लगाना स्टार्ट किया था कि हमें फाइजर चाहिए, हमें वी डोंट नीड इंडियन वैक्सीन, वी डोंट नीड दिस एंड दैट। देन आफ्टर दैट सब कुछ खत्म हो गया, देखा गया कि क्यू में कांग्रेस के लीडर्स पहले हैं वैक्सीन लगाने के लिए। दैट्स द फाइनेस्ट पार्ट। और उसके बाद जो हुआ, उनके परिवार वाले आया, रिश्तेदार आए, पड़ोसी आए, एंड देन द रेस्ट ऑफ द इंडियंस। अब सेम पैटर्न एमके अल्ट्रा का जो वर्जन है, इसको इंडिया में लागू करने का कोशिश में लगे हुए हैं। अमेरिका इज ए सक्सेसफुल नेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन फ्रॉड, जहां पर ट्रंप की इलेक्शन के टाइम पे फॉर एग्जांपल इन एरिजोना में 50,000 एक्सटर्नल वोटर्स का फ्रॉड हुआ था। अब वो टेक्नोलॉजी इंडिया में लागू करने के लिए कांग्रेस गया है यूएस में टू लर्न दैट टैक्टिक्स। अब इसी कारण ये सारे नौटंकी किया जा रहा है टू डाइवर्ट द कंट्रीज स्कोप फ्रॉम द मेन टॉपिक, टू डाइवर्ट द पीपल्स अटेंशन एंड टू क्रिएट केओस। सी दिस इज द वेरी लाइक ये आर्ट ऑफ वॉर है। चाइनीज आर्ट ऑफ वॉर में चैप्टर 6 में यही कहा जाता है, क्लेमर इन द वेस्ट, अटैक इन द ईस्ट, एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। इट्स अ परफेक्ट theory of from the art of war book. Right. We would love to have a session on geopolitics itself. Maybe अगर कल आपके पास थोड़ा टाइम हो तो हम उस we would love to talk about that. But coming back to, I think this particular incident जो अब हुआ है, और आगे आई एम श्योर क्योंकि पीएम का आया है इसमें जो बयान है वो बहुत ही इज वेरी कैलकुलेटेड इन हिज अप्रोच। वो जो बोलते हैं इट मीन्स अ लॉट, ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी वेरी स्क्रूटनाइज्ड, उसका मीनिंग होता है। सो स्पेशली जो हमने पहले बात की कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, सो आई थिंक दैट इज अ बिग वन। एंड आप जियोपॉलिटिक्स के बारे में कुछ इसमें ऑफ कोर्स प्लीज। सी जब से ये इंसिडेंट हुआ है तभी से हाई लेवल मीटिंग्स तो चल ही रही हैं, एंड द कॉज वुड बी द फोकस ऑफ द एवरी। इन दैट केस मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आया है जिससे कि जो सबोटाज है उसका जो एंगल है वो ज्यादा प्रॉम्प्ट होता है। इसीलिए मोदी जी का इतना क्लियर मैसेज हम लोग को मिला है। तो लेट्स लुक फॉरवर्ड। आई एम वेरी मच श्योर दैट द थिंग्स विल बी सॉल्व एंड कम आउट वेरी वेरी फास्ट। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। Just one quick point that there are two aspects to it. One is that see, that will take a little while to establish that there has been a sabotage. But meanwhile, even if there is a sabotage, a failure at the ground level has taken place. So there has to be a clear optics of heads rolling this time. वो किसकी वजह से क्या हुआ, लेकिन फेलियर तो हुए हैं ग्राउंड पे। वो चाहे ट्रैक का किसी के साथ प्ले किया गया, सिग्नल्स के साथ किसी ने कुछ प्ले किया, बट यू स्टिल हैव द वॉकी टॉकीज अवेलेबल एट डिफरेंट प्लेसेस, पीपल कनेक्टिंग विद ईच अदर। सो हेड्स एट दोज लेवल्स, ये ऊपर ये रेजिग्नेशन वगैरह, आई डोंट बिलीव इन दैट, बट पीपल फॉर द डेरिलेक्शन ऑफ सच ए मैसिव डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, हेड्स रोल होने चाहिए टिल वी कम टू द अदर कंक्लूजन, जिसका आज की डेट में वी ऑल डाउट about the sabotage. But meanwhile, something had to be done quickly, that dismissal levels at the operational levels have to take place, and maybe the criminal cases have to be registered with people. So that's what I thought I'd add. Thank you. All right. Shall we conclude? I think we have covered most of the points. Divaji, Dr. Bose, Dada chale gaye. Yeah, I think, sir, Right. What sir has said is absolutely correct, and
लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। तो अगर हम लोग उसको स्टैटिस्टिकली देखें कि लेट्स से 43% and then the rest, then we can get a clear picture. And obviously that 43% में आपको देखा जाता है कि 3% जो है वो डिसेप्शन है या प्रोपागेंडा है। 40% अगर सैबोटाज है, उसके साथ 3% प्रोपागेंडा है, so that constitute of 43%. So then we can get a clear picture of it, what is propaganda and what kind of elevation or what kind of inflammation it can create and destroy our country. But yes, we are very grateful to this great nation, to this great government and the great governance and the people, obviously, that irrespective of itne bhi like thunders and cyclones, India was there, India is there, and India will be there. Jai Hind. That's what makes it great ना, I mean, because I mean वही है कि मतलब साफ जब मौसम होता है तो उसमें तो anybody can sail his boat. What I mean, what distinguishes the greats is that, I mean, from the stormy waters, or here I think we have seen for the last 9 years how opposition has been, 10 years has been after, even before, I mean, आप 2002 से ही देख लीजिए मोदी जी के अगेंस्ट कितनी इसमें उन्होंने किया है कॉन्स्पिरेसीज वगैरह और कोशिश की है, but there is no man who can still come out of it and reach that height if he doesn't have a that kind of a clean character, मुझे लगता है, and that kind of a strong character. So I think he inspires the whole nation, and that's how we must look at it. आपदाएं आएंगी, आपदाएं अभी 2024 से पहले और भी बहुत सारी आएंगी, लेकिन हमारा आई थिंक जो इम्पोर्टेंट है is to keep the focus. Sometimes you also have to disregard the जो मुश्किलें आती हैं उसको ओवरलुक भी करना पड़ेगा, because you need to look at the larger picture, because there would be lots of distractions as we move on towards 2024. And yes, and this act can be taken as a distraction as well, जो उनको एक लार्जर गोल की तरफ लेके जाने की एक भारत को एक लार्जर गोल की तरफ लेके जाने का जो ट्राई कर रहे हैं मोदी जी और हम सब राष्ट्रवादी लोग। तो I think we had a really good discussion. We will try to follow it up. Thank you so much, Divaji. If you would like to close, and then we can close this one. Yes, closing मैं बस यही बोलूंगी कि एक we all have to wait until the real the information comes, what actually happened, what is the reason of this accident. But Rana sir and Dr. Bose, thank you very much for joining us. We really want to have such few more discussions on YouTube, so that your voice can reach to more people, because the kind of information you both bring to us is really rare, and with the detailed analysis and detailed we thank you very much for joining. Didi, actually Yes, what happened that 360 today morning, आज सवेरे 360 अमित degree भाई analysis. Yeah. No, Yes. it's just from our perspective, because from the morning when I was started tweeting it, I found lot many people are like appreciating the thing, but I was thinking of two options. One was, agar sabotage nahi hai, then what better we can do for our railways? We have an excellent government, we have the excellent engineers, there's no doubt. We have excellent scientific advancements and scientists over here. तो हम क्या कर सकते हैं कि लेट्स से इन दिस वे कि हमारे जो एज ओल्ड ये जो रेलवे ट्रैक है, अभी जो नॉर्मल रेलवे ट्रैक आता है इंडिया में और उससे कंपेयर किया जाए सबसे एडवांस ट्रैक होता है यूएस में,
रेलवे ट्रैक जो है, that is at least 1.5 to 2 inches taller than the railway track we use in India. और दूसरी बात, this is very important because I want to mention it, कि अंग्रेज के टाइम पे our railway tracks have wooden sleepers. और वुडन स्लीपर्स में क्या होता था कि शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इज मोर देन द कंक्रीट स्लीपर्स. ये टेक्नोलॉजी हम लोग बंद कर दिए क्योंकि कटिंग ऑफ वुड्स एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग. बट हमें जो लगता है कि अगर हमें कंक्रीट स्लीपर्स बनाना भी है तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ कंक्रीट. जो कंक्रीट स्लीपर्स यहाँ पर दिखा जाता है और जो कंक्रीट स्लीपर्स एडवांस दूसरे देशों में है, फॉरेन, इवन चाइना भी यूज कर रहा है उसको, कि जनरली दे यूज 1 feet 2 feet by 1 feet concrete sleepers that is much more flattened and that give a strong concrete base on the railway track. इसमें क्या होता है कि टोटल शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उसका बढ़ जाता है और रेलवे ट्रैक, रेल आगे जितने भी तेजी से चले उसमें डिरेलमेंट होने का चांस कम हो जाता है. So we have to think from that aspect as well, and we rather request the government to do some research on that. And we have, since we have all the facilities, there will be no situation that we cannot do it. हम जब चेनाब ब्रिज पे दुनिया के सबसे हाईएस्ट ब्रिज बना सकते हैं, when you can make the impossible task by making the railways reaching Kashmir, then we can do everything. So I have full faith in the government and the government bodies. Only thing is we need a shake-up, and the right person who can do the shake-up is obviously our beloved Prime Minister Modi ji. इसी के साथ आई थिंक हम समाप्त करते हैं आज की ये कवरेज. वी हैव ट्राइड टू एनालाइज दिस इंसिडेंट फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन भी थी. सो वी वुड ट्राई टू पब्लिश इट एज सून एज पॉसिबल. इसी के साथ थैंक यू सो मच. और हमारे दर्शकों से मैं ये छोटी सी अपील करना चाहूँगा, सब्सक्राइब आवर चैनल, सपोर्ट अस. हमारे साथ ट्विटर स्पेसेस पे भी जुड़िए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे एवरी सिंगल पर्सन has a voice. It's that powerful medium. So please do join us on Twitter Spaces every night 9:30 PM onwards. और इसी तरह से हम और भी कोशिशें करते रहेंगे कि जो राष्ट्र के लिए ज़रूरी मुद्दे हैं वो उठाते रहें. थैंक यू सो मच. जय हिंद. नमस्कार. नमस्कार. जय हिंद. जय हिंद.